Hello, this is Dr. Shuchi Singhal, working as Associate Professor at International School of Informatics and Management, popularly known as IIIM, Jaipur. I'll be talking about Introduction to Financial Management today. Financial management is a judicious blend of two things. One is management and second is financial. When we talk about management, it simply means the management functions like planning, organizing, directing and controlling. And when we talk about finance, finance basically refers to three categories of functions. First is procurement of finance, that means आपको finance कहाँ से लेना है. Second, utilization of funds, that means आपको कहाँ पर पैसा लगाना है. And third is disposal of profits, that means जहाँ भी आपने पैसा लगाया वहाँ से जो आपको profit मिला उसे आप किस तरीके से यूज़ करेंगे. And ultimately आपका objective है individual, organizational and social objectives को achieve करना. So this is what you mean by financial management. Now let us talk about the characteristics of financial management. Financial management is an essential part of business management. It simply means that in business you have different type of functions and the most important function is financial management. That is the management of finance, procuring money, investing it and getting profits. Second is continuous administrative function. It simply means that financial management is not a one-time affair. It is an year-long affair in which we need to put more focus, continuous focus on financial management. Then it is less descriptive and more analytical. It simply means that it does not focus only on describing the problems related to finance, but it is also related to analyze the business decisions, to analyze the financial data and then take decisions in order to fulfill the objectives. Then it is centralized nature. Now, as we have many functions in business, for example, marketing. Marketing function, आपको पता है कि marketing function you can have different marketing offices at different places. Like for example, in India, you have 15 marketing offices. But finance function is always centralized in nature. That means finance का काम हमेशा एक ही जगह से control किया जाएगा. So that is what you mean by centralized nature. So the other functions can be decentralized, but financial management is purely centralized in nature. Then you have, financial management is totally different from accounting function. Now when you talk about accounting, accounting simply means recording of data. You just make financial statements, the analysis, just the recording and the accumulation of the data. Whereas when we talk about financial management, it simply means that we are not going to only analyze the data which comes from accounting, but also we will be analyzing the financial problems which will be arising therein, and then we will also be focusing on getting the finance, then investing the finance and then analyzing the different financial position of the business. Then you have wide scope. Wide scope basically means like traditionally when we talk about पहले जो फाइनेंस फंक्शन हुआ करता था, यानी कि पहले जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते थे तो उसका मतलब सिर्फ इतना होता था कि आपको कहीं से भी फाइनेंस को प्रोक्योर करना है, प्राप्त करना है आपको कहीं से भी फाइनेंस को. लेकिन अब आज की बात अगर हम करें मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली स्कोप नैरो नहीं रहा, अब स्कोप काफ़ी वाइड हो गया है. वाइड स्कोप से मतलब है कि अब आप सिर्फ फोकस इस बात पे नहीं करते हैं कि आपको फाइनेंस सिर्फ लेना है. दैट मीन्स द फोकस इज नॉट ओनली ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, बट वी हैव सम अदर फंक्शंस ऑल्सो एडेड टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. लाइक नॉट ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस, वी ऑल्सो टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंस. फाइनेंस कहाँ से आएगा, कौन हमें देगा, फाइनेंस जहाँ से भी लेंगे उसकी कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए, और उस फाइनेंस को हम कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ इन्वेस्ट करने से
जो भी फाइनेंस हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी मैक्सिमम होना चाहिए. दैट मीन्स नाउ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप and we always wanted to cover not only the procurement of finance from appropriate resources wherein the cost of capital is minimum. Secondly, we also think about that wherever we are going to plan the investment, it should lead to optimum utilization of the investment. Then it is applicable to all types of organizations. Applicable to all types of organizations means financial management is not limited to one category of organizations. देखिए आजकल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ एक ही कैटेगरी के नहीं हैं. आजकल के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत सारे कैटेगरीज के हैं. लाइक फर्स्ट कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो कि कोई ना कोई प्रोडक्ट अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करते हैं. देन सेकेंडली वी हैव सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस. सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनाइजेशंस, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस. Then we also have another category of organizations like we have the profit organizations and non-profit organizations. Profit organizations basically means जिनका main objective है profit earn करना, and non-profit organization means जिनका main objective है सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना. ये एक पुराना कॉन्सेप्ट था जब ये माना जाता था कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस तक ही लिमिटेड है. लेकिन आज की हम बात करें मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो उस केस में हम लोगों को सिर्फ इस बात पे ध्यान रखना है कि न सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इक्वली एप्लीकेबल है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकता है. नाउ फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका स्मॉल है या लार्ज है, छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो या बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो या मैन्युफैक्चरिंग करता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो एक्टिविटीज़ एक जैसे तरीके की हों या डिफरेंट टाइप्स की हों. दैट मीन्स जो नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ है वो सिमिलर हो या नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो, सभी तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. So financial management overall, if I talk about, so it is something without which an organization cannot survive, without which an organization cannot grow, and without which we cannot think of an organization to be in existence. So in all, when we talk about financial management, we simply means that financial management is a very important function of an organization in which we plan the finance. That means from where we are going to obtain the finance. We are going to organize the finance. That means we are going to gather finance from different sources. And then ultimately we invest that finance at proper places. And the ultimate objective is to keep a track of all the financial activities taking place in the organization and to control the finance. Because controlling the finance is very important. So that is why financial management forms a very important function of the whole organization. So this is all about financial management. Thank you.